Hello friends, today we'll see the very first disk scheduling algorithm, that is FCFS. FCFS is nothing but first come first serve. So here one queue is given and whatever is the number of the track that we are given, that is served as per their sequence. So whoever is first, that will be served first. So here there is a queue 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65 and 67, and in the problem they have given that head starts at 53. So from 53 location we have to start our algorithm, disk scheduling algorithm, but the strategy is first come first serve. The problem is very simple. First you have to draw the table like this and name the queue or name according to ascending sequence. For example, we start from 0, then 14, then 37, then 53, 65, 67, 98, 122, 124, 183 and 199. So these are the tracks given and these tracks are arranged in ascending order. We have to start FCFS from 0. Okay, in the sequence the least track number is 14, but still we have to start from 0. So after 0 there is least element is 14, after that 37, 53 is not given in the queue, but our head is starting from 53, so we have to add the track number 53, then 65, 67 up to 199. So at 199 your disk is getting end, so we have added 199. So the problem is very simple. We start at 53rd location. So from 53 we will start. After 53 we start at location 53. Now first come first serve. In the queue first track is 98, so we have to take 98 number. So 53 के बाद आपका 98 directly जाएगा. So I have given a bright spot there, 98. Then 183, so it will go to 183. Then 37, see the sequence which is given in the queue. 183 के बाद आपका 37 है, तो आपको रिवर्स आना पड़ेगा 37 के लिए. सो इट इज़ 37 के बाद है 122, सो इट इज़ 122 के बाद है 14 के बाद है 124 के बाद है 65 एंड लास्ट इज 67. So in this way your tracks are get served in FCFS algorithm. Now when you draw these lines, you must show the direction of the movement. आपका जो हेड है वो कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है ये आपको दिखाना है, और जिस हेड पे आपको रुकना है वहाँ पे अगर थोड़ा ब्राइट स्पॉट देंगे या थोड़ा बोल्ड स्पॉट देंगे तो समझ में आ जाएगा इजीली कि कहाँ पे आपको रुकना है. सो 53 से स्टार्ट होके 98 पहला ट्रैक है, उसके बाद 183, देन 37, 120 अप टू 67. इस तरीके से वो स्कैन होगा. आपको याद रखना है कि FCFS में सिर्फ क्यू जो है वो मैटर करता है क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, बट स्टिल आपका जो डायग्राम है उसमें जो ट्रैक्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में पहले आपको अरेंज करने हैं और उसके बाद जो क्यू का सीक्वेंस होगा उसी तरीके से उसको सर्व करना है या उसी तरीके से हेड को मूव करना है. सो दैट्स ऑल अबाउट FCFS डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिदम.